used for relational databases. So relational databases in a way are relational to each other. Like there are tables that have foreign keys, primary keys. They have relations with each other, which we use to select them. Okay, so we are trying to go with all the basic questions that we have in SQL. So this is a website that I used to practice with when I was preparing to become a data scientist. Presently, I have 6 years of experience, and usually we need to brush up with things. So we are trying to brush up with SQL now, and SQL Zoo is a website that has like 12 problems, 12 kind of genres, we can say, starting from select, and it goes a little bit difficult in complexity with each step. Select name, select from, then we have joins, then we have sum count, null, numeric expressions, window functions, self join, and some quizzes. So without further ado, let us start with the very basic one. Slowly we'll move on with progression. Okay, this problem we have to introduce the world of countries. So select population from world where name is equals to France. So I'll just tell you the brief of how it works. I run the query that is inside this box, and it is showing me that this is the output of the query. Population is this, and ideal output should be 84432, but we are having this output. So we have to check to show population of France where name is equals to France. I think this is right only. Select population from world where name is equals to France. Let me see. So let's do some tinkering. Let's see where all the countries are, and we have to see for, let's say, where is the country given? Name is there, continent is there. So let's say that's name and population. Let us print this. We'll have all these countries. Hmm. And then we just select for where name is equals to France. Let us see what is the population of France. It is coming as 681, but the ideally answer should be 688. And the question asks us to show the population of France. Okay, modify to show the population of Germany. I was not sure. I didn't read this. Sorry, we took longer for the first question itself, but yeah, we'll keep up with the pace in the next question. Okay, so creating a list. The word in allows to check in the list. The example shows the name of population of the countries: Russia, Brazil, China, and India. Show the name for the population for Sweden, Norway, Denmark. I'll copy it directly from here, and inside of these all four countries I'll put the three countries. This should work. And what do we need? Name and population. Name and population for Sweden, Norway, and Denmark. Select name population from work. This should be, this is what we got. And should not have been there because there's an in bracket, so we have a list of three countries. Moving on to the next question. Which countries are not too big and not too small? Between allows us checking in the range. So between is the keyword that we have to work with. Example shows countries within an area of 25 to 3000, modified to show within 200. So it's a simple question. 200 to 2500. Let's see if we get the correct answer. We got the correct answer. Okay, we are done. Moving on to the next set. Select from world. So this is a table: name, continent, area, population, GDP. Okay. Let's go with the first question. Observe the result of running this SQL command to show the name, continent, population of all the countries. I think this should be good enough. So this is name, continent, and population of all the countries in the world. Okay, moving on to the next question. Large countries. So we have to see which are the large countries that has the population of at least 200 million. So 200 million has this many zeros, 8 zeros. हम क्या करेंगे? We'll directly copy this. We'll not do the long work. We'll do smart work. So at least is there. So we have to make it greater than this number. Select name from the world where population is greater than 2 million. We got the correct answer. Next question. Here we don't have the prompt. यहाँ पे हमारे लिए prompt नहीं है. हमारे लिए direct empty box है. And we have to create a query. So select name and per capita GDP. Per capita GDP is the GDP divided by the population. So this is the formula. Directly doing the smart work, हम इसको copy करेंगे यहाँ पे. GDP per population from world where population greater than
टू 1 2 3 4 5 6 7 8 आई थिंक 8 वाज द नंबर दो। करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन। दूसरा क्वेश्चन, साउथ अमेरिका इन मिलियंस। सो शो द नेम। सबसे पहले जो ये मांग रहे हैं वो लिख देते हैं, नेम एंड पॉपुलेशन इन मिलियंस। देखते हैं इन मिलियंस कन्वर्ट करेंगे बाद में, और कर देते हैं पॉपुलेशन को हम 10 लाख से डिवाइड करते हैं। 2 3 4 5 फ्रॉम वर्ल्ड वेयर कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका मांग रहे हैं, साउथ अमेरिका लिख देते हैं, MERICA, साउथ अमेरिका। देखते हैं क्या आंसर आता है। ओह, वी गॉट द करेक्ट आंसर द फर्स्ट है। पॉपुलेशन मिलियन में चाहिए था। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं एज पॉपुलेशन, एलियास दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, है ना। वी गेट पॉपुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो द नेम एंड पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, इटली एंड जर्मनी। वेरी इजी क्वेश्चन, नेम कॉमा पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड वेयर नेम इन, को हम चलो लिख ही देते हैं, कॉपी करने का सोच रहा था मैं, बट ठीक है। फ्रांस, जर्मनी एंड थर्ड वन इज इटली। टू गो, लेट्स सबमिट। करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, select name from world, sorry, where, एक लाइक कीवर्ड होता है हमारे लिए, ठीक है। नेम लाइक, लाइक में क्या होता है, परसेंटेज लगाते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज, परसेंटेज यूनाइटेड, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स आर द थ्री कंट्रीज। नेक्स्ट, टू वेज टू बी बिग। ओके, टू वेज टू बी बिग, अ कंट्री इज बिग इफ द साइज इज 3 million स्क्वायर किलोमीटर और इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन दिस। सो ये हमारी कंडीशन रहेंगी। Okay, so we have to find out, select name from world where this is the condition. Okay, so साइज के लिए देखते हैं क्या था हमारा टेबल, एक बार जाते हैं। सो वी हैव एरिया एंड वी हैव पॉपुलेशन, नो, दो कंडीशन हमें लगानी है। सो पहला जाते हैं एरिया, एरिया इज ग्रेटर देन 3 million स्क्वायर किलोमीटर, तो 3 million विल बी 30 lakhs इन इंडियन इज 30, 1 2 3 4 5, और इट हैज़ अ पॉपुलेशन मोर देन 200 million, तो ये 200 million हमारा आ जाएगा 250 with 8 zeros, so 2 3 4 5 6 7 8। See, wrong answer to few columns, they need more columns from us. What do they want? Name and population and area, so we need name, population and area. Let's see what do we get. We got the correct answer. Moving on to the next question. बाय द वे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते बता देता हूँ मैं कि आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सीक्वल, आई हैव बीन स्टडिंग सीक्वल सिंस पास्ट 6 7 years। तो स्टडिंग नो, इम्प्लीमेंटिंग, स्टडी तो हमने बहुत पढ़ाई करी है पीछे, तो वहाँ पे सीक्वल इज़ द फर्स्ट थिंग यू लर्न, बट वी यू नो थोड़ा सा टच निकल जाता है चीज़ों का इफ़ यू डोंट अपडेट योर सेल्फ। सो जस्ट टू रिवाइज, आई थिंक आई विल ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस इन डिटेल, बिकॉज इतना फ्रॉम स्क्रैच हम लोग ज़्यादातर करते नहीं है इतना बार बार, बट या आई शुड, वी शुड ऑलवेज रिवाइज थिंग्स। So we'll do exclusive XOR और exclusive OR is an XOR gate। So XOR अगर आपने पढ़ा होगा, ये this will be either or वाला condition होता है, so it's an XOR gate that we study in electrical, NOR, NAND, XOR। okay, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। शो द कंट्रीज दैट आर बिग बाय एरिया, फिर से सेलेक्ट नेम करते हैं, सिंपल, फ्रॉम वर्ल्ड वेयर एरिया ग्रेटर देन 3 million 30 lakhs, 30 1 2 3 4 5, और बिग बाय पॉपुलेशन। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है, पॉपुलेशन से अगर हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं, पॉपुलेशन शुड बी 250 1 2 3 4 5 6, बट नॉट बोथ। ओके, दे वांट one thing, not both of the one। okay, so name, we want population and area, तो इधर और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ये तो सब आई थिंक दिस इज जस्ट द एग्जाम्पल्स लिखने के लिए, बट ये हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सो इसमें एक बार ये रन करते हैं, सही रिजल्ट नहीं आएगा इससे, आई एम श्योर। दिस इज व्हाट दे वांट, either or। okay, so let us put this in a bracket। इसको एक दूसरे तरीके से करते हैं, या फिर तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये करते हैं एंड
पॉपुलेशन इज दिस। ये कंडीशन हमारा एक हो गया। ये हमारा इसी को कॉपी कर लेते हैं। हैव एज आवर सेकंड कंडीशन। सो सेकंड कंडीशन में एक चीज़ को हम ट्रू करते हैं, विच इज पॉपुलेशन इज ग्रेट एंड लेट्स मेक एरिया स्मॉल। ओके, सॉरी फॉर दिस अलार्म, मेरी घड़ी में अलार्म बज रहा है। एंड दिस शुड बी और। तो अभी क्या हो रहा है, या फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या फिर तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। एक बार रन करते हैं एंड वी गॉट द करेक्ट आंसर। दिस इज आवर एक्सॉर गेट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राउंडिंग। देखो भाई, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आई जस्ट राइट नेम, आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस, जो ये बागर होते हैं वो लिख लेता हूँ, बाद में लाइन बाय लाइन जस्ट एग्जीक्यूटेड। पॉपुलेशन इन मिलियंस, अगेन इसको डिवाइड करते हैं 10 लाख से, 2 3 4 5 फ्रॉम वर्ल्ड। ओके, वी ऑल्सो वांट जीडीपी इन बिलियंस, सो जीडीपी को बिलियंस में करते हैं। जीडीपी को बिलियन में कन्वर्ट करने के लिए अगर करना है तो ये रहा। चलो जीडीपी आई थिंक बिलियंस में ही है, इसको राउंड करने को बोल रहा है तो राउंड करेंगे हम। राउंड ऑफ जीडीपी टिल टू, देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। वेयर कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, अब देखो यहाँ पे हम इन भी लगा सकते हैं, बिकॉज इन में अगर सिंगल क्वेरी आ रहा है तब भी प्रॉब्लम नहीं करता है, और यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं, तो दोनों चीज़ें ठीक है। आई एम नॉट श्योर कि दिस इज़ व्हाट दे वांट, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पॉपुलेशन अगर वो बिलियंस में मांग रहे हैं तो दे वांट अस टू डिवाइड इट ऑल्सो। तो इसको पहले हम डिवाइड भी करते हैं, चलो डिवाइड कर देते हैं। 6411, राउंड तो ठीक हुआ है बट आई थिंक 6411 और ज़ीरो लगेंगे बिलियंस में। तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कितने बिलियंस में ज़ीरो लगते हैं, बट 641.10। देखो गाइस, हमारा आंसर तो ठीक आ गया। पॉपुलेशन को भी राउंड करना है, तो पॉपुलेशन को भी हम, वी वांट पॉपुलेशन टू आल्सो बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। दिस वर्कड फॉर अस। ठीक है, एलियास दे देते हैं, इसको हम बोलेंगे पॉप और इसको हम बोलेंगे जीडीपी। बस अच्छा भी लगना चाहिए आंसर हमारा, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमीज, हमारा भारत भी शायद ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के क्लब में आ गया है, तो ये आपका फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो क्वेश्चन पे जाते हैं। वी वांट द नेम पर कैपिटा जीडीपी। तो पर कैपिटा जीडीपी कैसे निकलता है, जीडीपी कितना है हमारा और उसमें पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड ऑल कंट्रीज वेयर जीडीपी इज ग्रेटर देन 1 ट्रिलियन। So this is one with 12 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And we have to round this to the nearest 100. Okay, nearest 100 में round करना है। don't know nearest 1000 में 3 से होता होगा। Let's see. ऑस्ट्रेलिया 64। आर वी राइट? अच्छा, इसको हमें शायद ऊपर सील होता है शायद, एस सी इज अ कीवर्ड दैट वी यूज राउंड करने के लिए। लेट मी सी, let me try this. Sling is the word. Don't know if this will work or not. Hmm. Let's try something else. We divide by population. Um, let's multiply it by, राउंड तो हो गया हमारा, 6400 चाहिए। नो नो नो, दिस इज नॉट द क्वेश्चन। चाह क्या रहा है हमसे, लेट्स सी। शो द नेम पर कैपिटा ऑफ द जीडीपी वेयर जीडीपी ऑफ एटलीस्ट 1 ट्रिलियन, राउंड टू द नियरेस्ट 1000। लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। यहाँ पे -3 अगर हम डालेंगे, दिस इज आई ट्राइड बिफोर। ओके, गॉट इट। आई फॉरगॉट द कीवर्ड
There's a seal also. I think seal is or ceiling or seal something is there, but I think round minus 3 works. Okay, next question. Name and capital that have the same length. So you can use the length function to write the number of capitals in the string. Just select name, length of the name. Okay, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है इससे. So what they want? Greece has capital Athens. Each of the strings of Greece and Athens has 6 characters. So Greece में और Athens में 6 characters है. Okay. Strings of Greece and Athens has 6 characters. So they want us to set the name and length of that name and the continent. So that length of the name and length of the continent should be equal. Hmm. So इन्होंने जी का एक एग्जांपल ले लिया हमारे लिए. That name is like in G. It's like G वाली जो सारी की सारी इनके पास में. This will not be a condition where हटा देते हैं. We can say where length of name is equals to length of our continent. इसको एक बार रन करके देखते हैं. आउटपुट तो आ रहा है. So they want only the name and the capital. इनको और कुछ नहीं चाहिए. नेम एंड कॉन्टिनेंट, सॉरी, नेम नॉट ऑन कॉन्टिनेंट, नेम एंड कैपिटल. कॉन्टिनेंट की जरूरत नहीं है. लेंथ हमारी कंडीशन में आएगी एंड कैपिटल हमारी यहाँ पे आएगी. ये सारी कैपिटल्स आ गई है जिनका नाम और कैपिटल का लेंथ इक्वल है. लेट्स सी व्हाट दे एक्चुअली वांट. ओके, दे आल्सो वांट जहाँ पे आई थिंक ओके दैट्स इज डिफरेंट. व्हाट डू वी हैव? ईरान कैपिटल, इराक, बागदाद. नो, आई थिंक वी डोंट हैव द राइट आंसर. Length of name is equals to length of the continent. This should be capital here. Got the correct answer. Okay, let's move. Next question. Capital of Sweden is Stockholm. Both the words start with S. It's very simple. I think I know what they want. We need the name and the capital where the first letter of each match. Okay. So यहाँ पे इन्होंने आंसर सा दे दिया, but we'll cut it. Name capital from word where फर्स्ट लेटर मैच. सो लेफ्ट कर दे नाम, लेफ्ट ऑफ नेम ऑफ वन, ये सेलेक्ट कर लेता है पहला लेटर. सो वील जस्ट असाइन इट एंड कंपेयर इट विद द लेफ्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑफ वन. इफ दे मैच कैन से वी हैव द करेक्ट. अब दे डू नॉट वांट सिमिलर, दे वांट, सी यू कैन यूज नॉट इक्वल्स टू. सो आर द सेम वर्ड, आई थिंक they do not want same. Let us see what they want actually. Okay, they want the same ones. Name and capitals match, but we should not include if they are the same word. तो ये कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी. And name should not equal to capital. Okay, let's move on. This is the correct answer. Question number 13. डिफरेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए. जब मैंने 2-3 साल पहले इसको किया था तब क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे. ओके, दिस एंड दिस हैव द वॉवल्स ए आई ओ यू इन द नेम. दे डोंट काउंट बिकॉज दे हैव मोर देन वन वर्ड इन द नेम. Find a country that has all the vowels and no space. Okay, so we have name. Name is like B. Okay, you can phrase name not like A to exclude the characters from your results. The query shows missing countries like Bahamas, Belarus, and Indonesia. Let us try to run it and see what kind of output. जब तक output नहीं देखते थोड़ा सा मन नहीं करता है. Mozambique is the only okay, only output that they want. Okay, so they need all the vowels. Simple है. Where name like, डायरेक्ट एक बार डाल के देखते हैं. नेम लाइक हमारे पास में गॉट इट, पी आ रहा है नेम के अंदर. ईजी है. इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड के साथ में इसको हम ए ई आई ओ यू का पेस्ट कर देंगे. ए ई आई ओ यू, लास्ट एंड हटा देते हैं. और ये दिस विल बी आवर ए, दिस विल बी आवर ई आई ओ यू एंड नॉट लाइक, दे डोंट वांट स्पेस. सो डोंट नो स्पेस अगर ऐसे डालते आएगा, बट लेट्स सी. लेट अस कमेंट द लास्ट लाइन. This does not work. You have, oh sorry, नाम नेम लिखना चाहिए. You should write name here. Hmm.
लास्ट कंडीशन हमारी जो थी, नेम नॉट लाइक, वी डोंट वांट स्पेस। सी मोजाम्बिक, वी गॉट इट। वहाँ पे हमें हर जगह पे नेम नेम मेंशन करना चाहिए, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर अस। ओके, मूविंग ऑन। धीरे धीरे ना, बिल्डिंग बिल्डिंग दिस स्पेस टू द वर्क। नोबेल, सो ये सारे के सारे नोबेल प्राइज विनर्स हैं। सो वी हैव 4 कॉलम्स इन दिस टेबल, ईयर, सब्जेक्ट एंड विनर, दैट्स व्हाट वी हैव। Change the query so that it displays Nobel Prize of 1950. 1950. Next question. So who won 1962 prize for literature? पहले तो यहाँ पे literature आएगा and यहाँ पे 1962 आएगा. Let's see. So who won the 1962 prize for literature? का spelling गलत होगा. I'm not good at spellings. Okay. Mr. John won it. So next we have here. Okay, let us start. Change the query so that it displays Nobel prizes for 1950. Let us see answer क्या आ रहा है. It is already done. I think we have edited it already. Show who won in 1962 the prize for literature. We have made the changes. 1962 subject is literature. Correct answer. Year, subject, where the winner is Albert Einstein. 1921 physics. Give the name from the peace winners from, okay, name of the peace winners. Subject is peace and year is 2000, since year 2000 including 2000. Correct answer. Next question. Show all the details. Details में क्या आता है हमारा? Year, subject and winner from Nobel. Where? What is the condition? Subject, literature. कॉपी कर लेते हैं जल्दी से. And year between 1980 and 1989. Correct answer. इंक्लूसिव में क्या होता है? वॉट एवर वी मेंशन इन बिटवीन ना, दिस बोथ आर इंक्लूसिव, इसको इंक्लूड कर देते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. शो ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल विनर्स. सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोबल वेयर ईयर इन 1970. आई डोंट थिंक ये वाली कंडीशन आएगी, फिर भी वील जस्ट रन इट एंड सी व्हाट इज द आंसर दैट दे वांट. पीस प्राइज विनर चाहिए इनको. दे वांट पीस पीस पीस. सो लेट अस सी सब्जेक्ट. और आई थिंक दे वांट दीज 4 पीपल, तो हम इन दीज 4 पीपल के लिए ही निकालेंगे. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेबल वेयर विनर इन द लिस्ट. व्हाट इज द लिस्ट? दिस इज द लिस्ट. तो इसको हम पैरेंथेसिस में डालते हैं. हमारा सिंगल पैरेंथेसिस एंड कॉमा, सिंगल पैरेंथेसिस एंड कॉमा, कॉमा रह गया आइला, यहाँ पैरेंथेसिस और single. I think we will get the answer. Correct answer. Next question. Select a winner from Nobel where name winner. हाँ? Winner का name is like, यहाँ पे हम डालेंगे परसेंटेज जॉन और बाद में भी परसेंटेज, बिकॉज यू वांट हर जगह से जॉन. व्हाट इज इट सेइंग? कुछ तो गलत हुआ है. यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस. रिजल्ट इज व्हाट वी गॉट. व्हाट वी वांट फर्स्ट नेम एज जॉन. ठीक है, तो स्टार्टिंग होनी चाहिए जॉन से, बाद का नहीं होना चाहिए. सो वी विल से बाद में कुछ भी आ जाए, पहले हमें जॉन ही चाहिए. वी गॉट करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट यू वांट सेलेक्ट ऑफ ईयर. वाई आर है यहाँ पे. सब्जेक्ट एंड विनर फ्रॉम नोबल वेयर सब्जेक्ट इक्वल्स टू फिजिक्स.
एंड ईयर इज इक्वल्स टू 1980। इसके साथ में क्या चाहिए, ये हमें ब्रैकेट में लगा देना है, बिकॉज एक ये पहली कंडीशन है एंड सेकंड कंडीशन इज सब्जेक्ट इज केमिस्ट्री एंड ईयर इज 1984। हमारा सेकंड कंडीशन है। ये दोनों को मिला के हमारा टोटल कंडीशन बन रहा है। कुछ तो सिंटेक्स में डामाडोल है भाई। व्हाट इज द एरर हेयर? लेट अस सी। सब्जेक्ट इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री एंड ईयर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे और आना चाहिए पहले तो, और यहाँ पे फ्रॉम में एम रह गया। आई थिंक वील हैव द आंसर। ईयर शुड बी वाई आर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शो द ईयर, ईयर इज वाई आर, बार बार मैं गलती कर देता हूँ। सब्जेक्ट नेम, नेम की जगह आएगा विनर। फ्रॉम नोबेल, वेयर, ईयर 1980, winners of 1980 excluding chemistry and medicine. So सब्जेक्ट लगा देंगे नॉट इन केमिस्ट्री एंड मेडिसिन। मेडिसिन में एंड नहीं आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिस्ट करना, क्योंकि हमें डालना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर दैट वी गेट। अला ये तो अटक गया। करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। We need to see the year, subject, and name from Nobel for the people who won medicine prize. So subject हमारा आएगा medicine. At an early, in an early, what is this? In an early year before 1910, not included 1910. So हमें year लगाना है is greater than 1910. Yeah, together with the winners of literature and subject. This is our first condition. So they want together with the subject of literature, तो और लगाएंगे सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट क्या मांगा है उन्होंने? लिटरेचर प्राइज। विल कॉपी दिस later after year 2004 and year should be greater than 2004। देखते हैं if this works, this will work। क्यों नहीं काम करेगा भाई, हमने लिखा है। नहीं करा, ये तो जादू हो गया। कुछ तो हमने गलत किया है, मे बी वी मस्ट हैव डन अ सिली मिस्टेक। यहाँ पे इज इक्वल्स टू रह गया हमारा। So they want year, subject, and winner, where subject is medicine in an yearly before 1910. So it should be before, not less. And this is after 2004। यहाँ पे इंग्लिश बोलते बोलते इंग्लिश लिखने भी लग गया मैं। यही तो वो है हमारा। टुगेदर में एंड लगा के देखते हैं। एंड तो यहाँ नहीं आना चाहिए, क्या गलती कर रहा हूँ मैं? बिफोर 1910 इट शुड बी लेस देन 1910, ये हो गया। लिटरेचर प्राइज विनर टुगेदर विद लिटरेचर ईयर आफ्टर 2004। ओके, इंक्लूडिंग 2004। यहाँ पे इक्वल टू रह गया। करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करना है यार, टाइम नहीं लगाना। फाइंड ऑल द डिटेल्स ऑफ प्राइज वन बाय पीटर गुनबर्ग। बड़ा अजीब सा नाम है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। एक स्टार फ्रॉम नोबेल वेयर विनर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम इन नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट ऑल द प्राइज वन बाय यूडीन ओनील। तो
सेलेक्ट क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्राइस कौन सा है हमारा सब्जेक्ट, डिटेल्स ऑफ द प्राइस, तो स्टार फ्रॉम नोबेल ही कर देते हैं, नोबेल फ्रॉम नोबेल वेयर विनर इक्वल्स टू हमारे यूजीन नोबेल ओनील से। एक घातक मिस्टेक कर दिया हमने, क्या मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक किया है। ओके, ओ नील, यहाँ पे ओ इज यहाँ पे ऑलरेडी एक नो रिडंडेंट चीज हुई हुई है, दैट इज वाई यूज डबल कोट्स, यहाँ पे सिंगल कोट्स ऑलरेडी था इसलिए। करेक्ट आंसर, यूजीन ओनील ने कुछ नहीं जीता है हमारी तरह। चलो नेक्स्ट जाते हैं, सेलेक्ट द विनर्स, ईयर, ईयर अब यार से आएगा, सब्जेक्ट फ्रॉम नोबल वेयर विनर नेम स्टार्ट्स विद सीनियर, विनर लाइक कर देंगे, and यहाँ पे सर से करेंगे। ओके, इट स्टार्ट विद सर, so we'll do सर, बाद में we'll do parenthesis। यहाँ पे they are asking for order, order by, then they are ordering it by first and then most recent first, order by year करेंगे and then the name order, then the winner is there। चलो let us run this। Wrong answer, some of the data is incorrect, some is incorrect। फर्स्ट इज लाइक सर से हमारे सारे नाम आ गए, ठीक है। सेकेंड इज व्हाट दे वांटेड, मोस्ट रीसेंट फर्स्ट, सो मोस्ट रीसेंट में ईयर डिसेंडिंग आएगा बिकॉज बड़ा ईयर पहले चाहिए यहाँ पे, आई थिंक या सेकेंड असेंडिंग स्टार्ट हो गया बिकॉज डिफॉल्ट पे असेंडिंग होता है। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ ट्यूटोरियल दिया हुआ है, हम ये नहीं देखेंगे, हम इसके बिना ही करेंगे। ओके क्या मांग रहे हैं, शो द 1984 विनर्स। 1984 कंडीशन है, subject ordered by subject and winner name, so order by subject and winner name, but list chemistry and physics at the last। ओके ये हमारी एक डिमांडिंग कंडीशन आ गई कि ये लास्ट में आना चाहिए। so they are asking that expression subject in can be used as a value, it will be 0 or 1। पहले तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे रन करके देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। SQL Server में we use this double hyphen as comments। Anyways, chemistry and physics is coming at the last. So what do we have? Subject in chemistry and physics. So our answer is looking like this. So we have to rate these two subjects at the last। सोचने दो हमें। We can do it with window function, but I'm thinking about a better way to not use window function right now। Okay, let us try subject in order by winner। Let us just first do subject in our, what was that, physics and chemistry, ये हटा देते हैं। Okay, then we will first do subject then do winner। अभी क्या हो रहा है, इन्होंने ऑर्डर कर दिया फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बेसिस पे सबसे पहले, ठीक है, देन इट विल बी ऑन सब्जेक्ट एंड देन इट विल बी ऑन विनर। तो आई थिंक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री लास्ट में तो नहीं आएगा, बट आई थिंक लेट्स सी।
Did we do any mistake? Hmm. Trying to figure out physics का P capital only. Physics, chemistry, we have closed it. Subject and winner. Syntax तो ठीक है. Winner at line 5. Oh, double commas है. Okay, so my bad. So we have physics and yeah, chemistry आना चाहिए यार. What kind of mistakes I'm doing? Correct answer. केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओके. यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स को ऑर्डर कर रहा है डिसेंडिंग के उस पर. ओके, लिस्ट डाउन कर दिया बट फिजिक्स केमिस्ट्री को सबसे एंड में ला रहा है. ओके, वी आर डन विद नोबेल ऑल्सो. सारे क्वेश्चन हो गए. जल्दी जल्दी अब तीसरे जगह पर आते हैं. सेलेक्ट इन सेलेक्ट सब क्वेरी. आवर सब क्वेरी. गुड ओल्ड सब क्वेरी. ओके, list each country where population is larger than that of Russia. Russia. So name from world where population should be Russia here. Correct answer. Next question. Richer than UK. So we need to find the countries name from world where continent is equals to Europe. Europe मांग रहे हैं वो. And GDP per capita. So GDP GDP okay, they only want GDP. GDP greater than select GDP from world where name is equals to सब पे राज करने वाला देश एक जमाने में. जर्मनी आंसर आ रहा है. इज इट लेस देन दैट दे वांट? उल्टा करके देखें. बहुत आलसी इंसान हूँ. वेयर कॉन्टिनेंट शो ऑल द कंट्रीज इन यूरोप. ठीक है, सारी कंट्रीज यूरोप में है जिनका जीडीपी पर कैपिटा. आई थिंक दे आर आस्किंग फॉर जीडीपी पर कैपिटा. पर देख लेते हैं. यस, दिस इज व्हाट दे वांट. जीडीपी लिखा है बट दे वांट जीडीपी. ओके, पर कैपिटा जीडीपी दे वांट. माय बैड. So per capita GDP should be greater than UK. Let us see. Correct answer. Okay, Austria, Belgium, very nice. बहुत तरक्की कर ली इन देशों ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिस्ट द नेम कॉन्टिनेंट फ्रॉम वर्ल्ड वेयर. क्या मांग रहा है, एक मिनट. लिस्ट द नेम कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. क्वेश्चन ही गलत है क्या? नेम कॉन्टिनेंट्स ऑफ कंट्रीज. कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रीज in the continents containing either Argentina or Australia. रुको, पहले इनका एक्सपेक्टेड आंसर देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग. अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया. अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ओशियाना. डिफिकल्ट टू थिंक वेयर कॉन्टिनेंट नेम इन. सी, you want Argentina और ऑस्ट्रेलिया. आई थिंक ये तो कॉन्टिनेंट है ना. कॉन्टिनेंट इन ऑर्डर बाय नेम ऑफ द कंट्री.
नहीं, डिफिकल्ट है बिकॉज थोड़ा सा आई थिंक ये सब क्वेरी से ही होने वाला है वैसे तो। इसको हम यहाँ पे यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर लगाएंगे सब क्वेरी, ऑर्डर बाय हम साइड में करते हैं, एंड सेलेक्ट फ्रॉम, और वी जस्ट से नेम। इधर से वैसे सही तो नहीं आना चाहिए बिकॉज पहली चीज़ तो इसको हमने डबल ब्रैकेट्स में लगाया, ठीक लगाया। सेलेक्ट नेम फ्रॉम वर्ल्ड वेयर continent in these two countries, no, name in these two countries. Okay. अभी हम देखते हैं चाहिए क्या इन्हें। अगेन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है बिकॉज नेम एंड कॉन्टिनेंट ऑफ कंट्रीज in continents containing either Argentina or Australia. So, continent containing either Australia or Argentina. Continent containing either Argentina or Australia. थोड़ा इंग्लिश इज डिफिकल्ट। ओके, ये ट्राई करके देखते हैं एक बार। फ्रॉम वर्ल्ड वेयर कॉन्टिनेंट, उल्टा करके देखते हैं, नेम की जगह कॉन्टिनेंट सर्च करते हैं। कॉन्टिनेंट हमारा सेलेक्ट कॉन्टिनेंट फ्रॉम वर्ल्ड वेयर नेम इन दिस ऑर्डर बाय नेम। आई थिंक दिस विल वर्क। मोर देन वन रो यहाँ पे इन कर देते हैं। व्हाट द करेक्ट आंसर। तो ये क्या चाह रहे थे, कॉन्टिनेंट चाह रहे हैं जहाँ पे नाम इज अर्जेंटीना एंड ऑस्ट्रेलिया, और उन सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, वन सेकेंड, थोड़ा कंफ्यूजन ना ठीक हो जाएगा। लेट मी जस्ट प्रिंट दिस, इसको हम कट कर देते हैं अभी। इनको सारे के सारे नाम चाहिए। लेट मी प्रिंट इट अगेन। दे वांट नेम एंड कॉन्टिनेंट, उनको सारे इन दो कॉन्टिनेंट्स के अंदर का कंट्रीज चाहिए। दैट इज व्हाट दे वांट इन शॉर्ट। कंफ्यूज कर दिया यार छोटी सी चीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री has a population that is more than United Kingdom but less than Germany. So where population more than United Kingdom, कॉपी कर लेते हैं, and population is less than Germany. Show the name and population. Population ही प्रिंट कर दिया। चलिए, अरे हम तो भूल ही गए सब क्वेरी पे है, तो ऐसे डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। इससे बेटर पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन लेस देन, बस टू जर्मनी। ये हमारे इधर से आ जाएगा करेक्ट आंसर। अरे एन जी से कहाँ पे लगा दिया मैंने, वेयर इज दिस jargon mistake।
हाँ, हमने तो उसी से कहीं नहीं लगाया। Select name population from world where population is greater than, and select population from world where name is equals to Germany, where name is equals to United Kingdom. एक बार इसको हम कट करते हैं। अगेन इम्प्रॉम्प्टू लाइव सेशन में ना ऐसे ही होता है रिकॉर्डिंग में, छोटी छोटी मिस्टेक्स कहाँ से होती है पता नहीं चलता है। ओके, आई थिंक बस यहाँ पे अभी हमें यूनाइटेड किंगडम लगाना है। कुछ तो गलती था, समझ नहीं आया कहाँ पे किया था, बट था कुछ ना कुछ। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पूरा करना है, बहुत देर हो गई है। नेम फ्रॉम वर्ल्ड वेयर नेम इन, हमें यूरोप के अंदर का नाम चाहिए। और सेलेक्ट नेम फ्रॉम वर्ल्ड, ये हम इनडायरेक्टली क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता। आई थिंक यहाँ पे डायरेक्ट ही होना चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए। वेयर कॉन्टिनेंट यूरोप, एंड कुछ कंडीशन रहेगा इनका एक और। शो द पॉपुलेशन एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की पॉपुलेशन चाहिए हमें। तो पॉपुलेशन को हमें शायद डिवाइड करना पड़ेगा। जर्मनी का पॉपुलेशन इज 80 मिलियन। पॉपुलेशन लेट अस सी डिवाइडेड बाय फ्रॉम वर्ल्ड वेयर नेम इज इक्वल्स टू जर्मनी। और हमें जस्ट अ सेकेंड इस पॉपुलेशन को पहले राउंड करना है। आई डोंट नो राउंड कहाँ तक करना है, but इसको we will round I think up till 2 decimal places, and they want us to concat a percentage with this। यहाँ पर हमने परसेंटेज concat कर दिया है। एज यूजल कुछ तो एरर आता ही है। एक बार ये सब हटा देते हैं फिर देखते हैं। ये राउंड concat सब हटा देते हैं। ओके, परसेंटेज जर्मनी वाला तो आ रहा है। एक बार इसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं और फिर देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है इसका। 3%, 10%, now we will round this। um, and we will concat a percentage with this। Let's see, यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा, कनकैट नहीं हो पा रहा है। कनकैट के लिए कुछ
एरर आ रहा है, concat भी हो गया, but they want us to round to zero, it suppose. See, not the right answer. Okay, moving on. What they want? Bigger than every country in Europe. Select name, uh, world, where, name. Okay, GDP is greater than every country in Europe. Select, एक बार यहाँ पे नाम डालता है, from world, where, continent in Europe. Okay, some countries may have null values. Okay, we were doing this bigger than every country in Europe. Which countries have a GDP greater than every country in Europe? They only want the name. GDP is greater than, and name is not null. Let's see output आता है. Syntax error, यूरोप के आसपास में कुछ है एरर. ब्रैकेट नहीं है. And do name continent equal to Europe instead. सब query returns more than one row. तो हमें GDP चाहिए वैसे तो. पर इसका आउटपुट देखते हैं किस तरह का आउटपुट आ रहा है. वी ऑल गेटिंग द GDPs एंड वी आर कंपेयरिंग ऑल्सो द GDPs ओनली. ठीक है, वेयर GDP इज ग्रेटर देन दिस. तो एक बार नॉट नल वाली कंडीशन हटा के देखते हैं. सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन अ रो. I think there's an all. But with the condition they wanted, they also want one more condition जो उन्होंने करेक्ट आंसर तो दे दिया. Okay, next. Find the largest country by area in each continent. Show the continent in name. यार इतना बड़ा. Okay, select continent name population from world. Multiply क्यों कर रहे हैं? Let's see what answer we get. They want continent name and area. तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे एरिया आएगा. Population is not what they want. World X, where population is greater than all population from the world where population is greater than zero and the continent. क्या चाह रहे हैं? Correlated synchronized सब query चाहिए इनको. Find the largest country by area in each continent. Okay, so continent चाहिए and the largest area in that continent. Okay, world X. So world X is our first. ठीक है, यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं ज्वाइन करके. वी हैव ज्वाइन दिस एंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन जीरो की जगह पे आएगा. ओके, पहले जीरो लगा देते हैं. सेलेक्ट पॉपुलेशन फ्रॉम वर्ल्ड वाई. वाई से हम पॉपुलेशन निकालेंगे वेयर वाई डॉट कॉन्टिनेंट इज इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉन्टिनेंट एंड पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ दिस. तो हमारे पास में कॉन्टिनेंट आ गया, नेम आ गया. सो अफ्रीका के लिए क्या है? नाइजीरिया. इज नाइजीरिया द हाइएस्ट पॉपुलेशन कंट्री in Africa? That is wrong. Algeria is. But the syntax says the population is greater than all, equal to, greater than करके देखते हैं. Okay, equal to ही आएगा वैसे तो, because largest वाली country से नहीं मैच करना चाहिए. So this is continent is same and the population is greater than population from all the countries in the world where population is same. इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं है. I think